हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक each one of you for liking and subscribing my previous videos. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड everyone is keen to know about it, कि हमें अपने किचन का काउंटर टॉप्स और बैक स्प्लैश लगाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, अ, ये G5 G7 आर्टिफिशियल स्टोन is bit costlier than the regular granites and stones that is available in the market. तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है while installing the kitchen countertop and backsplash. तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए that is electrical wiring, switches and sockets that you would like to conceal it in your wall. And जहाँ जहाँ पे आपको switches की ज़रूरत है, sockets की ज़रूरत है, points की ज़रूरत है, that is very important before installing this countertop, that is G5 or G7. Even I would say अगर आप normal granite से भी करते हैं, it's very important. Sometimes we realize that हमारे पास extra points नीचे होने चाहिए थे. When we realize that we also want to have some points for the electric oven or the dishwasher or the microwave or for LEDs and all, you need points. So at that time we realize uh, that it is a must uh, before we start the kitchen work. So ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये सबसे पहला स्टेप करना चाहिए, electrical wiring to all the possible places that you want to, and that is the first step. Secondly, there is one more thing that we need to take care, and that is the water pipeline connection, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अक्सर while installing the dishwasher. So normally हमें builders they give a point for the tap, but usually you don't have a point beneath the granite slab, that is the countertop, for this dishwasher. And by the time we realize he should have given that, it's very difficult to again do those plumbing work and get it done. So always remember, whenever you start with this work, water connection, the pipe extensions for dishwasher is also equally important. जैसा आप electrical points के बारे में सोचते हैं, water connection is equally important if you want to install the dishwasher. जैसा कि आप देख सकते हैं, the builder had provided me only one water point, that is the tap point, and मैंने एक्स्ट्रा एक नीचे से एक पॉइंट निकाला just because I wanted to install my dishwasher near the basin. So that is what is very important. आपका एक बार countertop and backsplash लग जाता है, आप उसे दोबारा तोड़ नहीं सकते हो. So remember friends, it is very important. किसी भी हाल में आप ये मत भूलना कि आपको electrical wiring और water connections सबसे पहले कराना है before you install the kitchen countertops and backsplash.
Okay. So, thirdly, the most important thing is um, क्या हमें बैक स्प्लैश पहले बिठाना चाहिए या काउंटर टॉप पहले बिठाना चाहिए? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत लोग ये सवाल अक्सर पूछा करते हैं एंड इसका सिर्फ एक ही आंसर है. You need to install the kitchen countertop as the first thing. You should never make this mistake of installing the backsplash as first and then the countertop. So आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है किचन काउंटरटॉप सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए एंड एक बार वो अच्छी तरीके से आपका आ, कड़प्पा के ऊपर बैठ जाता है, बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाता है, सेट हो जाता है, then only you will take the next step, that is to install the uh, kitchen backsplash. Now the question is हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? The reason behind it is अगर आप किचन काउंटर टॉप को पहले बिठाते हैं एंड बैक स्प्लैश को उसके ऊपर बिठाते हैं तो अक्सर आप जब काउंटर टॉप की सफाई करते हो पानी से या नॉर्मली आप पोछा लगाते हो उसके ऊपर कुछ पानी वगैरह गिर जाता है तो वो कभी भी अ, नीचे की तरफ नहीं जाता है और पानी हमेशा बाहर ही रहता है तो दैट इज अ सेफ अप्रोच बिकॉज अगर आपका पानी नीचे चले जाता है तो नीचे में जो आपका टैंडम बॉक्सेस होते हैं सो उन पे जो प्लाईज लगे रहते हैं उन पे पानी लगता है एंड देन दे स्टार्ट्स आई मीन खराब होना शुरू हो जाता है एंड they slowly start deteriorating. So in order to avoid that, we definitely need to follow this approach. The fourth important point is अक्सर आपने सुना होगा इनफैक्ट आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि जब आप बेसिन बिठाते हो तो जो भी बेसिन आप बिठाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप स्लैब की कटिंग कर लें. सबसे पहले स्लैब की कटिंग कर ले अकॉर्डिंग टू द बेसिन एंड फिर आप उस स्लैब फिर बेसिन को आप बिठाओ. So that is actually not the correct approach, I will say, and that is also not safe because if you are dealing with granites and also that is okay because वो काफी सस्ता स्टोन होता है एंड उसमें आप इस तरीके का रिस्क ले सकते हो. But when you're dealing with G5, G7, these are very, very costly and expensive stones available in the market, and you cannot play around or experiment things just simply by listening what your friends are suggesting. So you need to take an approach which is proven and just safer. So I'll tell you the safest way is always अगर आप इस पिक में देख सकते हैं कि उसके साइड में जितना मेजरमेंट का आप स्लैब कटिंग करके उसके अकॉर्डिंगली साइड्स में जॉइंट्स लगा के बिठा सकते हैं दैट इज द मोस्ट सेफर अप्रोच एंड ये बहुत खूबसूरत भी दिखता है बिकॉज द मोमेंट दे जॉइन टू ईच अदर उनके बीच में एक ग्रूव जैसा वो लुक डेवलप होता है जिसकी वजह से इन ग्रूविंग के वजह से वो और खूबसूरत लगता है एंड then any gaps further is like as you know in my previous videos I had suggested like Tinax is a thing that can be put on top of it to fill those gaps तो joints का पता नहीं लगता है and जहाँ जहाँ पे हमें grooving दिखानी रहती है तो वो भी दिखता है तो it looks very beautiful. So I'll also show you I mean आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा वो कितना स्मूथ लगता है दिखने में और कितना अच्छा लगता है दिखने में. Okay friends, so the next and the last important point जो मैं आपको बताना चाहूँगा is
नॉर्मली हमने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए या किसी स्किल्ड लेबर को ये बोलते हुए सुना होगा या किसी वीडियोस में हमने सुन लिया होगा कि जब आप बिल्ट इन हॉब्स की फिटिंग करवाना चाहते हो, जब बिल्ट इन हॉब्स इस पे बिठाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले बिल्ट इन हॉब्स की मेजरमेंट ले लेनी होती है एंड देन व्हाइल यू कट डाउन द स्टोन उसी वक्त उसी साइज का इसकी कटिंग कर लेनी होती है। तो ऐसा हमें अक्सर बोला जाता है which is actually not the correct approach. So जब when you suggest uh, uh, this way, so ये this is applicable to granites that आप पहले cutting कर लेते हैं and then you fit as a countertop. So it works in case of granites, but it does not work in case of G5 and G7 because ये मटेरियल पूरा ग्लास का होता है और अगर आप इसकी कटिंग पहले से करवा लो हॉप के बिल्ट इन हॉप के साइज के अकॉर्डिंगली, सो देयर आर मैक्सिमम चांसेस दैट ये बीच से क्रैक डेवलप कर जाए या बीच से टूट जाए। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा रिस्क ले रहे हो बीच में क्रैक डेवलप हो जाता है तो आपका पूरा पैसा पानी में जाता है। So because after that if you try to join it also वो दिखता है and वो lifetime दिखेगा। So never try to experiment in this way. So the approach, I mean the safest approach and a proven approach that I can tell you, which is what I have done in my kitchen. So आपको सबसे पहले इस स्लैब को कड़प के ऊपर अच्छे से वाइट सीमेंट एंड सैंड के हेल्प से इसको बहुत अच्छे से एज अ काउंटर टॉप बिठाना है। डोंट वरी कि आपको बिठाते वक्त काटना है या नहीं, बट जस्ट स्लैब को आप इसको उसके साइज के हिसाब से स्लैब के साइज के हिसाब से आप उसको आराम से बिठा लो। एंड आफ्टर अ डे और टू जब आपको लगे कि पूरी तरह से अच्छी तरह से सीमेंट के साथ बैठ गया है, so at that time you are free to take the measurement of your built-in hob and फिर आप उसकी कटिंग कर सकते हो। एंड आई कैन गिव यू अ गारंटी दैट उसके ऊपर कभी भी कोई क्रैक्स नहीं आएगा अगर उसके बाद आप कटिंग करते हो, जब ये पूरी अच्छी तरह से बैठ जाता है। सो ऑलवेज ट्राई दिस अप्रोच एंड दिस इज अ प्रूवन अप्रोच। आप मेरे किचन देख सकते हैं, आई विल शो यू द पिक्स ऑल्सो, एंड इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है एंड इट इज वेरी इजी टू कट। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज important point that we need to know, and before we start all these points that should be very clear right from the point number 1 to the last point that I said in this video. Otherwise there is always a bit of risk involved, and I would say as you being my viewers, you need to go through the process that I have sincerely followed, and now it is installed successfully in my kitchen with no issues at all. Okay friends, now you can see uh, built-in hob, kitchen sink, that's a basin, and आपका kitchen countertop and kitchen backsplash is all set, and अभी पूरे अच्छे तरीके से ये फिट हो गया है completely. Now you can see there is no flaw. built-in hob आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से वो ऊपर फिट हुआ है, एंड अगर आप ध्यान से देखें किचन के बैक स्प्लैश पे आपको हल्के से ग्रूव्स दिखेंगे which looks very beautiful. I mean I can't tell you, these grooves are just simply I mean awesome, and ये दिखने में बहुत सही लगते हैं जब आप सामने से किचन की तरफ एंटर करते हो।
So that is one more thing I wanted to say. And this is the complete kitchen. I mean, initially how it started and now अब ये कैसा दिख रहा है. So thanks everyone for watching this video. I believe uh, मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, जो एक्सपीरियंस that I have experienced while installing this as a countertop and a backsplash. So I have shared all my experience with you, and I personally believe this is going to help each one of you. I mean, whosoever is keen to know about the installation process of G5 artificial marble or G7 artificial marble. So thanks again for watching my video, and I hope this is an eye opener for all of you, that these are the things that you're supposed to know. And don't forget to like my video and share it with your friends as much as you can. So those who are looking for this information, please share it with them. And yes, don't forget to subscribe my video, and I'll keep my effort. I'll just keep uh, giving my effort to make these kind of videos as much as I can. Thank you so much.